गाइस ऐसा लग रहा है आई कैन सी इनटू माय ओन सोल। काफी डार्क सा लग रहा है ना। ओके बस इतना क्लोज तो माय आई डॉक्टर आल्सो डजंट गेट यार। मतलब वो पैराशूट देखने की अब जरूरत ही नहीं है। व्हाट वी कैन डू इज यही वाली जो फुटेज है ना यही भेज दूंगा मैं इस बारी डॉक्टर को। बोलूंगा भाई यही देख के बता दे मेरा चेकअप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई लोग दिस is the Deizo film Miosis macro lenses, a lens that can take you way closer to anything that you should ever be. And today, we're going to push it to its limits. Can this lens make everyday, normal things look ridiculously cinematic? Can it reveal details no human eye should ever see? Can this turn this cheese grater into something greater? ये देखो अंतरिक्ष की यात्रा. This is the surface of Mars. This looks so crazy, dude. चलो, the plan today is to show you that these Miosis macro lenses are not just any ordinary macro lenses. There is more to it. But वो मैं आपको थोड़ा एंड में बताता हूँ. तो पहले शुरू करते हैं the macro aspects of this, which brings us to the 4 WTFs. What the fuck is this lens? Who the fuck is this lens made for? Why the fuck do you need this lens? And what fucking body part do you need to sell to buy this lens? I know एक WTF इधर उधर हो गया, ठीक है, एक्सक्यूज करो, आगे बढ़ते हैं. पता नहीं क्यों माफी मांग रहा हूँ. अनअपोलोजेटिकली दिवांग होना चाहिए था. अपोलोजेटिकली दिवांग इसलिए बना क्योंकि बहुत सॉरी मांगने वाला हूँ मैं इस चैनल में आप लोगों के साथ. मेरी बहुत गंदी सी लैंग्वेज है, मेरी बहुत गंदी सी सोच है, वो सारी बाहर निकालूंगा आपके सामने. तो प्लीज एक्सक्यूज करना और आगे बढ़ते रहना. हाँ चलो नेक्स्ट करते हैं. The fuck is this lens? So these lenses are T2.8 and they come in 24, 32, 65 and 90. मेरे को डीजो वालों ने 32, 65 और 90 दिया है to review. These lenses are also 1:1 magnification. That means जो आपके लेंस के सामने सब्जेक्ट है वही आपके सेंसर पे सब्जेक्ट है. But as you move from minimum focus to infinity, these lenses basically have the magnification changes, it gets bigger and bigger. Apart from this, it has 16 blade aperture. That means soft and creamy focus fall off होता है इसमें. फोकस फॉल ऑफ कुछ भी बोल रहा हूँ. फोकस फॉल ऑफ होता है इसमें. वो बिल्कुल एकदम क्रीमी सा बैकग्राउंड बन जाता है. आपके बोके बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं इसके साथ. एंड पता है ये किसके लिए होता है? अगर एंटमैन वाज अ सिनेमाटोग्राफर नो ही वुड हैव बॉट दीज लेंसेज बिकॉज द लाइफ साइज मैग्निफिकेशन फीचर इज सो ब्यूटीफुल एंड यू कैन गो सो क्लोज जैसे मैंने आपको पहले दिखाया. सो दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट. हु द फक इज इट फॉर? So who actually needs these level of details besides forensic experts from CID दया दरवाजा तोड़ दो वाले जो लोग हैं. उसके अलावा ये जाता है for people who are into macro tabletop photography. This is the thing to buy. The textures, the details. Oh my God! मतलब it's a dream come true. If you're a wildlife enthusiast who does this with insects or try to take the veins of a leaf or anything in the forest which feels so beautiful, one up close, these are the lenses. थोड़े से भारी है तो handheld नहीं हो पाएगा इसके साथ काम, but I still think it can do some beautiful shots. कुछ समझे दया? And if you want to show high speed, our friend Alex Grimmer has been using these lenses in almost every kind of application. Look at the kind of details he's able to bring out with the Phantom camera. It's gorgeous. Apart from that, no color fringing. There is no weird chromatic aberration. But guys, if you are thinking कि ये मैं vlogging के लिए use करूँगा और I will use this as a selfie camera for my beautiful skin, ये उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना है. और अगर आपको ऐसे करना है तो अपने आप बाप के पैसे कहीं और खर्च दीजिए, इस पे मत लगा दीजिएगा. Why the fuck should you get this lens? You know, it can get close to 6 inches, which means it's basically looking at the molecular structure of whatever you put in front of it. ये फैब्रिक देखो, मतलब look at it. How close can I get? ये 32 है, ये 65 है, ये 90 है. सब में this looks like just brilliant, right? और ये देखो, ये चीज ग्रेटर है. ये चीज ग्रेटर है, उसके अंदर से हमने ये बस धुआं निकाला है. It looks like जसपाल भट्टी की भट्टी. Unlike photography macro lenses, the 90mm Sony, you see it struggling, and then you see the 100mm Canon that is also struggling. But ये दा focus breathe ही करते रहेंगे. Seriously, there is no need for any extension tubes, no diopters. This is just pure macro optics.
precision at its best. So this brings us to the last segment, guys. Ki which fucking body part do you need to sell to buy these lenses? Actually दोनों किडनियां नहीं, बट एक किडनी तो कहीं ना कहीं से जाएगी $5,000 का एक लेंस है और अराउंड $5,389 एक्चुअली एग्जैक्टली। और अगर 3 लेंस का किट लेते 32-65-90 या 24-65-90 तो ये आपको पड़ता है विद द पेलिकन केस, ऑल द माउंट्स एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड, ऑल द पैराफेर्नालिया, कुछ $15,999 का। बट इफ यू यूज द लिंक दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन यू विल बी एबल टू गेट अ स्पेशल ऑफर डिस्काउंट। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि दिस लेंस इज एक्चुअली an investment and not just an expenditure. See, if you're into advertising, food, filmmaking, tabletop products, ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो this lens is just apt and this will pay for its own self. Again, ये मेरा मतलब ये नहीं है बोलने का कि मतलब आप लोग ये बिना किसी बिजनेस स्किल्स और फिल्म मेकिंग के कर पाएंगे। ये अपने आप ही भगवान के भरोसे खरीद लिए और बोला हाँ अब हमारे पास लेंस है तो काम आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं? मैं इस चैनल पे आपको बिजनेस और फिल्म मेकिंग के बारे में भी अगली बार बताऊंगा, तो उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो ड्रॉप इन कमेंट्स। जैसे मैंने आपके लिए जसपाल भट्टी की भट्टी द चीज ग्रेटर बीइंग ग्रेटर बनाया, वैसे मैं और कैसी चीजें शूट करके आपको दिखाऊं सो दैट यू कैन एक्चुअली फील दैट दिस लेंस इज वर्थ इट। हाँ, आई आल्सो सेड इन द बिगिनिंग दैट देयर इज मोर टू दीस लेंसेज व्हिच इज मोर देन द मैक्रो एस्पेक्ट। सो लेट मी टेल यू दैट दिस इज नॉट जस्ट फॉर प्रोडक्ट और टेबलटॉप फिल्म मेकिंग। ओह, ब्राउन चॉकलेटी इंडियन स्किन, बेस्ट है भाई, बेस्ट। सॉरी मैं दरिंदा नहीं हूं, ऐसे बस मुझे लगता है मैं बहुत भावुक इंसान हूं। दिस वन कैच, focus pulling with this is a little tricky, but ऐसा नहीं कि you can master everything with practice, right? तो आप थोड़ा सा practice करेंगे तो ये लेंस भी आपके हाथ आ ही जाएगा। So just make sure that you have focus peaking on when you're actually shooting with these lenses to get the correct kadak sharp focus with these lenses. So technically you could use this lens to shoot a food commercial and also a short documentary in the same day. So मतलब macro by the day and cinema prime by the night. So that is why I find this lens a very versatile lens. एक किडनी में भी जी लेते हैं यार लोग। कौन है ये लोग? Just please don't shoot anyone this close with this lens, huh?